Good morning, students. Our today's topic is movement due to growth. Some plants, like the pea plant, climb up other plants or fences by means of tendrils. These tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object. पी प्लांट में आपने कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स ही देखी हैं स्प्रिंग जैसी, उनको बोलते हैं टेंड्रिल. जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती हैं तो वो जो टेंड्रिल्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट के आसपास कॉइल कर जाते हैं ताकि वो उसको पकड़ लेते हैं ताकि उस प्लांट को सपोर्ट मिल जाए, वो खड़ा रह पाए. चाहे वो हेज हो या फेंसेस हो, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके आसपास वो उसको कॉइल करना शुरू कर देती हैं. ये स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं. होता क्या है, जो टेंड्रिल का पार्ट ऑब्जेक्ट के साथ में टच कर रहा है वहाँ पे ग्रोथ कम होती है, और जो टेंड्रिल का पार्ट बाहर की साइड में है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो जिस तरह से वो बाहर की साइड में ग्रोथ ज़्यादा है तो वो उस तरफ कॉइल करना शुरू कर देगा, उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कॉइल करना शुरू कर देगा, उसको सर्कल कर लेगा. यही रीज़न है कि वो उसके आसपास घूमता रहता है. क्या है, जो टेंड्रिल है उसका पार्ट वो एक उससे ऑब्जेक्ट से चिपक गया. जिस पार्ट से जिस जगह से वो चिपका है वहाँ पे ग्रोथ कम होगी, और जो बाहर आउटर साइड में है जहाँ पे वो जिस पार्ट से नहीं चिपका, जो बाहर की तरफ साइड है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी. जब बाहर की ग्रोथ ज़्यादा होगी मीन्स डायमीटर बाहर का बढ़ रहा है, तो वो कॉइलिंग ऑब्जेक्ट के आसपास में कॉइलिंग कर लेगा. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. Because this growth is directional, it appears as if the plant is moving. Let us understand type of movements with the help of an example. In plants move in response to stimuli, and they are usually growth movements. There are mainly two types of movements in plants. They are nastic movements and tropic movements. Nastic movements. The movements which are neither towards nor away from a stimulus are called nastic movements. Example: movements in the leaves of mimosa, in which the leaves fold when touched. Tropic movements. Tropic movement is the movement of plants with respect to a stimulus. When a plant grows towards a stimulus, it is a positive response. For example, growth of stem towards light or phototropism. When a plant grows away from a stimulus, it is a negative response. For example, growth of stem away from gravity. Environmental triggers such as light or gravity will change the directions that plant parts grow in. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. So, in two different kinds of phototropic movements, shoots respond by bending towards light, while roots respond by bending away from it. How does this happen? This help the plant? When the shoot is moving towards the light, so all the leaves can get enough sunlight so that they can perform the function of photosynthesis. When root is moving towards the water, the purpose is to absorb water for the plant requirements. Plants show tropism in response to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downward, while the shoots usually grow upward and away from the earth. The upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of earth or gravity
is obviously geotropism. When movement is due to gravity, this pull is known as geotropism. If hydro means water and chemo refers to chemicals, what would hydrotropism and chemotropism means? When the stimulus is because of water, the movement shown by the plant due to the stimulus of water is known as hydrotropism, and the movement shown by the plant due to some chemicals is known as chemotropism. Can we think of examples of these kinds of directional movements? One example of chemotropism is the growth of pollen tube towards ovule, about which we will learn more when we examine the reproductive processes of living organisms. पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में क्या है? जब पोलन ग्रेन्स आकर स्टिग्मा पर फॉल करते हैं, आफ्टर गेटिंग मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा, पोलन ट्यूब आ जाती है. स्टिग्मा कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और वो उस पोलन ट्यूब को गाइड करती है टूवर्ड्स द ओव्यूल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. स्टिग्मा के ऊपर कुछ पोलन ग्रेन्स हैं, मॉइस्चर लेके पोलन ट्यूब आ जाती है. उस पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक जाने का रास्ता कुछ केमिकल्स बताते हैं जो कि स्टिग्मा सिक्रीट करता है. लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. The movement of sunflower in response to day or night, on the other hand, is quite slow. Growth related movements of plants will be even slower. I hope this is clear. Next part we will continue afterwards. Thank you.